Microsoft PowerPoint. So the first MCQ that is displayed on your screen is, which of the following section does not exist in slide layout? हाँ जी, स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सा वाला जो सेक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या कौन सी हम चीज जो है ऐड नहीं कर सकती? वी कैन there is a section of titles, there is also a section of lists and charts that we can add in our slides, but we cannot add different animations in our slide, and there is no separate section of slide in the slide layout. So the correct option for MCQ number 1 is D, animation. Dash control all the main slide control task of your presentation. Dash control all the main slide control task of your presentation. हाँ जी, कौन सा ऐसा जो है ना आपके पास की है, या फिर आपके पास कौन सी ऐसी फंक्शन है जो कि आपके पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, ये स्लाइड कंट्रोल मेन स्लाइड कंट्रोल के जितने भी टास्क हैं उसको कंट्रोल करता है. सो टास्क पेन इज एक्चुअली यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क ऑफ योर प्रेजेंटेशन. दैट इज ऑप्शन ए फॉर MCQ number 2. A new presentation can be created from. We can create a presentation from blank presentation. We can create a presentation from already existing presentation, and we can also create presentation from design template. So all of the above are correct options for MCQ number 3. That is option D for MCQ number 3. In slide layout panel, how many layouts are available by default? In slide layout panel, how many layouts are available by default? So how many layouts are there in PowerPoint presentation that we could be used for making our slide? So there are total 4 layouts that can be used in slides or PowerPoint that can be used by a user. So the correct option for MCQ number 4 is B, 4. The PowerPoint view that displays only text. हाँ जी, कौन सा पावर पॉइंट का व्यू है जो सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट शो करता है? सो आउटलाइन व्यू इज अ व्यू दैट इज यूज्ड इन पावर पॉइंट टू डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट. दैट इज ऑप्शन ए, आउटलाइन व्यू. टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन अ प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस. अच्छा जी, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम लोगों ने जिस सेल के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, आई वांट टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल फ्रॉम दैट सेल, हम लोगों ने हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? वी शुड बी प्रेसिंग both A plus B, ठीक है, in order to activate the previous cell in a pre-selected range press, in a pre-selected range. Okay, so the correct option for MCQ number 6 is D, both A plus B. When the formula bar is activated, you can see. हाँ जी, फॉर्मूला बार जब एक्टिवेट कर दिया जाता है आपके एक्सेल की, कोई भी आपने जो है ना बनाया हुआ एक्सेल के ऊपर अपनी वर्कशीट बनाई है, ठीक है, या वर्कशीट एक्टिवेट, आपका फॉर्मूला बार उसके ऊपर एक्टिवेट कर दिया गया, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन एंटर, you can also cancel, you can also use insert function by using the formula bar. So both A, B and C are correct for MCQ number 7. That is option D. In a worksheet you can select. हाँ जी, हम लोगों ने select करना है, तो which part of worksheet can be selected by using worksheet? We can select the entire worksheet, we can select the row, we can select column. So all of these are correct for MCQ number 8. MCQ number 8, that is option number D. Okay, what should be adding before a fraction to avoid entering it it as a date? हाँ जी, what function should be used so that the date आपकी जो fraction है A over B के form के अंदर, it should not enter as a date in your worksheet. So we should be adding zero space that to avoid entering a fraction as a date. That is option number D, zero space for MCQ number 9. Which of the following is not an option in the spelling dialog box? हाँ जी, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन सी वाली जो है ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो एडिट की ऑप्शन जो है आपके स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं आती, इग्नोर ऑल और चेंज की ऑप्शन आती है, ठीक है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर MCQ number 10. To save a presentation, you can press, हाँ जी, which function keys should be used in order to save your presentation? We can use Control plus S in order to save our presentation. That is option number C for MCQ number 11.
Which key on the board can be used to view slide in the slide show? हाँ जी, जो हम लोगों ने slide देखनी है अपनी slide show की form के अंदर, which key should be used? So we can use F5 in order to view our slide in view our presentation in the form of slideshow. That is option number C for MCQ number 12. Slide transition can be applied to करंट स्लाइड के ऊपर भी स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्टेड स्लाइड के ऊपर भी कर सकते हो, और ऑल स्लाइड्स के ऊपर भी कर सकते हैं. ठीक है, that is option number D, all of the above for MCQ number 13. Using a PowerPoint, the theme are available in. हाँ जी, PowerPoint के ऊपर आप presentation बना रहे हो, which tab is actually have the themes available in it. So design tab is a tab that has all the themes available in a PowerPoint presentation. For MCQ number B, design tab. In a PowerPoint, add effect include entrance, exit, motion path. हाँ जी, all of these are actually included in the add effects of PowerPoint presentation. So the correct option for MCQ number 15 is D, all of the above. MS PowerPoint is a application software, system software. हाँ जी, DBMS है या फिर hardware है कंप्यूटर का. So we should know that what is application software. An application program or application software is a computer program designed to carry out a specific task other than one relating to the operation of the computer itself, typically to be used by end users. So the correct option for MS PowerPoint is application software, C. In Excel, using home tab, you can insert. हाँ जी, home tab को इस्तेमाल करते हुए which of the following things you can add? We can add sheet row, we can add sheet column, we can also add sheet cell. So all of the above is the correct option if while using MS Excel. That is D for MCQ number 17. Which type of charts can Excel produce? By using Excel, we can produce area chart. We can also produce 3D or 2D chart. We can also produce scatter charts. So all of the above are the correct option for MCQ number 18. Which is not a function of MS Excel. Count, average, and max and min if. तो आपका जो minimum if है या min if है, that is actually used to get the minimum value in a data set using multiple criteria. You can use an array formula based on the min and if function. ठीक है, this function is minimum if function is the minimum and in function is not available in MS Excel. It is not one of the function of MS Excel, while count, average, and max, all of these are included in the function of MS Excel. So the correct option for MCQ number 19 is D, min if. In Excel, we can summarize data using table, chart, formulas, or pivot table. In order to summarize our data in Excel, we can be possibly use pivot table to summarize our data. That is option number A for MCQ number 20.